regression of y on x, y on x is y on x, we know the equation of line y on x, a plus bx, this is the x. So this is the equation of line of regression y on x. This is the second kind of equation. The constant a and b are obtained from the normal equation, where a and b are constant and can be obtained by the normal equation. So here write where a and b are constants can be obtained from the normal equation. And what are the normal equations? What are the normal equation? We have the normal equation sum of y equal to n a plus b sum of x. Okay, this is the first normal equation. And second normal equation is sum of product of xy equal to a sum of x plus b sum of x square. Okay, name this equation number 2. So these are the normal equation. So a constant a and b can be determined by solving this two normal equation. So you can obtain the constant a and b. Now after obtaining the constant a and b, you can put the constant value a and b in this equation. So that equation is what? Your equation of line y on x. Okay, so this is the first normal equation for the equation of line of regression y on x. Thus, to fit the line of regression, to fit the line of regression, the line of regression y on x, that is y equal to a plus bx, means to fit a straight line, means to fit a straight line to the given set of values, straight line to the given set of values, x and y. Means what? You have to fit, if set of data points are given x and y, you have to determine the equation of line y on x. Okay, by using this normal equation. So that line is known as what? Straight line. This is the straight line. Okay, so you have to fit the straight line by using set of data points. Now similarly you will have the other line of regression, the other line of regression, other line of regression x on y, is given by regression of line x and y. X equal to, we will write x equal to a plus by, where constant a and b can be obtained from the normal equation, where constant a and b can be obtained from the normal equation,
normal equations. We have the another normal equation for regression of line x and y के लिए अलग इक्वेशन है. दैट इज व्हाट सम ऑफ x इक्वल टू एन ए प्लस बी sum of y. Name this equation number. Name this equation number here 1. And another equation we will have sum of product of x y, and this equal to a sum of y plus b sum of y square. Same opposite equations, normal equations है यहाँ पे. So this is what equation number 2. So constant a and b can be determined by using these two normal equations where n is the number of observation. Okay, so first of all we should find the sum of x and sum of y, then sum of x square, sum of x square and sum of y square, then sum of product of xy. As usual, we found the sum of product of xy and sum of x square, sum of y square, and sum of x and sum of y. Okay, so you can determine by preparing your table. So if I ask find the equation of regression of line y on x, then you can use this normal equation. If I ask find the equation of line of regression x on y, then you can use this equation and solve these two equations simultaneously, and you can determine the value of a and b and substitute value of a and b in this equation. So that will be your required equation of regression of line. These are the straight line. X on y and y on x both are the straight line or first degree curve. Okay, now let us do the problem based on this example. The following table gives, write down the problem. The following table gives marks in two short term examination, in two short term examination, short term examination obtained by 5 students, obtained by 5 students, 5 students in the subject मैथमेटिक्स. मैथ्स का मार्क्स है आपका, ठीक है. इन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फर्स्ट वन यूनिट टेस्ट 1 मार्क्स इन UT1 शॉर्ट टर्म एग्जामिनेशन, मार्क्स इन UT1 यूनिट टेस्ट 1, ठीक है. नो मार्क्स इन यूनिट टेस्ट 2, मार्क्स इन यूनिट टेस्ट 2. ये दोनों के मार्क्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? पहला 6 to 10 4 8, 6 to 10 4 8 ये आपके मार्क्स हैं. देन 9 11 5 8 7 8 7. Okay, what have to do? We have to go for next page. What have to do? Determine two lines of regression. Determine the two lines of regression. The two lines of regression. Two lines of regressions by the method of least square. By
the method of least square. Okay, by the method of least squares. Okay, let's do the solution for this. What have to what have to find out? We have to find out, determine the two lines of regression. Means what? We have to determine the lines of regression x and y on x both. Okay, so first we determine the lines of regression y on x. So let the lines of regression y on x be the line of regression line on let the line of regression y on x be given by y on x. What is the y on x? A plus bx. नेम दिस इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन स्टार नाम दो. Okay, now what? Our job is to prepare table. Then what are the normal equation for that? The normal equation for this is given by the normal equation for this equation. Normal equation for this straight line is given by straight line is given by, what are the normal equation? We already wrote here. Normal equation for y on x के लिए क्या है हमारा? Sum of y and a. Please tell me. Sum of y equal to n a plus और क्या है आगे? B summation of x. हाँ, b sum of x. इसको इक्वेशन नंबर 1 दो. सेकंड बोलो. Sum of product of x y equal to how much? Next A बोलो. sum of x plus A sum of x plus B sum of x square. b sum of x square. Okay, now let's prepare your table first. Now for this we need table, so let us first prepare our table. So for this we writing x y, then x square y square, then sum of product of x y. Now prepare your table. How many data points are given? 5 points. So चलो टेबल बनाते हैं. What happening? Just prepare a table. That is what? X square, sorry, x y x square and y square. Correct. Now write down the column of x. How much data points are given? 6 to 10, 6 to 10, 4, 8. It is correct. Then 9, 11, 5, 11, 5, 8, 7. Now squaring them. So squaring them, 6 6 are 36, 2 to the 4, 100, 4 square 16, 64. Squaring this, 9 9 ja 81. Then 11 square 1 to 1, 5 square 25, 8 square 64, 7 square 49. Is that correct? Is that correct? Yes or no? Yes, sir. Now multiply this. Sum of product of x y. We need to find sum of product of x y. For this we multiply first two column. So multiply करो.
How much this? 54. 11 to the 22. Then 10 5 ja 50. Then 32. 4 into 8. 32. Then 56. 8 multiplied by 7, that is 56. Now find the sum of each column. Sum of each column. Just determine sum of x. फटाफट निकालो. We will not do total of this. Use your calculator. Sum of x square, then sum of y square, then sum of product of xy. चलो फटाफट निकालो. What is the sum of x? 30. 1 3. 3 0 30. 30. Okay. Sum of y. Sum of y how much? 40. 40. Yes, sir. 40 40. Then 220. 220. Then next sum of y square. 340. How much? 340. 40. Then next sum of product of xy. 214. 214. All other students please verify whether sum is correct or not. यहाँ पे मिस्टेक होगा तो आगे भी मिस्टेक ही होगा. प्लीज चेक इट. नाउ जस्ट कंप्लीट योर टेबल. आपको टेबल को अच्छे से बनाना है एकदम नाइसली. Okay, just prepare your table. Now this complete your table. For this you will get 2 marks for your table. Okay, now see here. Now substituting all the values in that normal equation. This is equation number 2. Substitute all the values in normal equation. So putting all the values in normal equation. Now we will have sum of y, that is 40. Okay, and this equal to na, total number of observation. How much? 1 2 3 4 5. 5. Total number of observation is 5. A plus b. B is what? B to b है. Sum of x, that is how much? 30. We write here 30a. Correct? Now name this equation number 3. इसको equation number 3 नाम दे दो. Now substituting next value in next equation. So from this you will have sum of product of xy is 214, and this equal to sum of x. Sum of x is what? 30. So you will get 30a plus next term b, and sum of x square. Sum of x square is how much? 220. 220a. Sorry, यहाँ पे कौन सा है? b है, तो राइट डाउन द कांस्टेंट b. यहाँ पे भी b है ना. So just write down the constant b. B and b. Now name this equation number 4. Now solving equation number 3 and 4 simultaneously. Next page please. Solving equation number 3 and 4. We get just find out constant value a and b. Find out constant value a and b. Use your calculator or do by calculation. See here, in equation number 1 we want to multiply by 6. In equation number 1 we want to multiply by 6. तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा. 30 हो जाएगा. 30a and 30a. This will cancel. So in equation number 1,
In equation number 1, we multiply by 6 and what have to do, and subtracting from, sorry, equation number 1 नहीं है, in equation number 3 अपने यहाँ पे क्या इक्वेशन लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो जस्ट राइट डाउन इक्वेशन नंबर 3. In equation number 3, multiply by 6 and subtracting from equation number 4. So in equation number 3 में 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 0. How much this? Tell me the equation by multiplying. 24 0, and this equal to 6 5 जा 30, 6 5 जा 30a, 30a, and plus यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 180, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 you will get 180. So 180b. Okay, now what is the equation number 4? Equation number 4, please tell me. 214, tell me equation number 4. 214, the next, Equal to 30A. how much? 30A plus 220B. 30a plus 220b. Now solve this. Now we will change the sign of each term. So 30 minus 30a, 30a minus 30a, this will cancel. और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सेपरेट करो फटाफट. 2 से तो 0 हो गया, एंड यहाँ 10 और यहाँ से 6, यहाँ पे कितना बचा, 3 minus 1, how much? 2. 3 minus 1, how much? 2, and this will 0. So this equal to, यहाँ से कितना मिलेगा आपको, यूज योर कैलकुलेटर एंड सब्ट्रैक्ट इट. 180 minus 220, how much? 180 minus 220, how much? minus 40b. Minus how much? 40b. 40b. Okay, from this यहाँ से आप b की वैल्यू निकालो. Therefore b equal to 26 divided by minus 40. Just cancel it. So b equal to how much? Divide करो. 0 point how much? 0.65. Correct. माइनस में आएगा, minus 0.65. Okay. Now substituting this value in equation number, any one of this equation number 3 और 4 में किसी में सब्स्टिट्यूट करो. चलो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो. Putting this value in equation number 3, putting, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे पुट करो. Putting b equal to minus 0.65 in equation number 4, we get 214 equal to 30a plus 220 into minus 0.65. मल्टीप्लाई करो फटाफट. 214 equal to 30a Minus 143. minus 143. ओके, चलिए इसको उस साइड भगाओ. सो विल हैव 214 माइनस गोस प्लस हियर 143 इक्वल टू 30a. ऐड करो, हाउ मच दिस? 357. 357 equal to 30 times of a. So therefore a equal to 357 divided by 30. So from this you will get a equal to how much? 11.9. 11.9. Correct. So you will get 11.9. Okay. Now putting the value of a and b in equation number star. Go to the next page. Putting value of a and b. Putting
values of putting values of a and b in equation number star. A and b in equation number star. We get how much we get? Substitute कर दो. We get y equal to a. A is what? 11.9 minus b is 0.65. 0.65x, and which is require your straight line, require regression of line x y on x. Okay, getting this much? Which is require, which is required straight line, which is require straight line, or line of regression y on x, or line of regression y on x. Okay, so this is the first line of regression. Now similarly you can find second line of regression. Okay, so for second you can use the second normal equation. So let the line of regression x and y be the line of regression x on y be given by x equal to a plus by. Name this equation number डबल स्टार, इसको डबल स्टार नाम दो. ओके, एंड द नॉर्मल इक्वेशंस आर गिवन बाय, the normal equation for this straight line is given by the normal equations for this regression of line x on y or y on x. This you can say normal equation for this straight line is nahi are. Normal equation for these straight lines are given by, what are the normal equation for this? ये वाला सेकेंड वाला लिखेंगे हम. Sum of, please tell me the sum, this equation, sum of x plus ny, sum of x plus na, and plus next B summation of x. tell me, b summation of X. x, then sum of product of x y equal to how much? A summation x a summation x plus B plus summation of x square. हाँ b summation of x स्क्वायर. ठीक है सर, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स एंड वाई के लिए केवल वाई एक ही बार आता है, अभी प्रोडक्ट में आता है. ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है. और पहले वाले में यहाँ पर भी आपका वाई कितनी बार आता है, किधर गया वो इक्वेशन? आपने गलत बोला क्या इक्वेशन? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर वाई ऑन एक्स. यहाँ पे वाई स्क्वायर रहेगा ना, ध्यान से बोला करो भाई, आप उल्टा बोल दिए क्या? दिस इज वाई एंड दिस इज वाई स्क्वायर. प्लीज वेरीफाई वंस अगेन. टेल मी दिस नॉर्मल इक्वेशन, सम ऑफ एक्स इक्वल टू एन ए प्लस बी सम ऑफ वाई. आपने टोटली रॉन्ग बताया. You are not paying attention over here. Who tell me? Who will tell me? चलो सिंह स्नेहा, टेल मी द नॉर्मल इक्वेशन. Okay, sir. हाँ बोलिए. Sum of x is equal to
sum of x equal to NA NA plus plus B sum of Y. B sum of y. Then next, Sum of XY sum of product of xy is equal to equal to A sum of Y. A sum of y plus B B sum of Y square. B sum of y स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से रहेगा आपका. अपोजिट कर दोगे तो आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा. Now substituting all the values in this equation, this normal equation. Name this equation number 4 के बाद ये equation number 5, then equation number 6. Okay. Now substituting all this value from table. यहाँ से पुट अप करो, फटाफट पुट करके बताओ मुझे. चलिए, sum of x is how much? Sum of x is how much? 30. Sum of x is 30. Okay. N is 5. Total number of observation is 5a. Okay. And B, sum of y is how much? 40. 1 4 40 40. 40 40b. Okay. Now next, sum of product of xy. Tell me sum of product of xy. 214. 214. 214. Then next one, sum of y is how much? 40. 40a. And plus sum of y square. 340. 340b. Okay. Now we will solve these two equation. Equation में क्या नाम दिया था हमने? 3 4. Okay. चलिए, इक्वेशन नंबर इसको 7 दो. इक्वेशन नंबर 7 and equation number 8. Now solving equation number 7 and 8. Solving equation 7 and 8. So for this, what have to do in equation number 7 में we have to multiply by 8. Then this become 40 and we will cancel 40 minus 40. Okay. So in equation number 7 multiply by 8, then minus, किससे माइनस करेंगे? इक्वेशन नंबर 8 से. इक्वेशन नंबर 8. लेट्स प्रोसीड हियर. सो इक्वेशन नंबर 7 में 8 से मल्टीप्लाई करो. सो यू विल गेट 30 multiplied by 8, you will get 240, and this equal to 5 multiplied by 8, that is 40. So this become 40a, and plus 40 multiplied by 8. How much this? 320b. Now write down the equation number 8 below. So your equation number 8 is 214, and this equal to 40a, and plus how much? 340b. ओके, चलो इसको सेपरेट करो. यहाँ से इसको किधर लेके जाएंगे? ये यहाँ से साइड में ले लेते हैं. ठीक है. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस by changing sign. So we change the sign of this. प्लस का यहाँ पे माइनस, then minus, then become minus. So 40a minus 40a will gone. 40a minus 40a will be gone. Now subtract this. So how much this? 40, 10, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 6. 3 minus 1, how much? 2. 26. And this equal to, ये तो आपको 0 मिल जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? minus 20. Is this correct? Is this correct? Yes, sir. Minus 20b. Now go to the next page and find the value of b. So यहाँ पे कितना था? How much this? 26, and this equal to minus 20b. Is that correct?
26 minus 20b. Okay. So this become b equal to 26 by minus 20. Just divide it. So b equal to how much? b equal to how much? minus 1.3. Minus 1.3. इतना ही आता है. Yes, Now sir. substituting value of b in equation number 8 में डालो. So putting b equal to minus 1.3 in equation number 8. In equation number 8 we get 8 equation. कौन सा 8 है आपका? ये वाला 214 and this equal to how much? This 40a. This equal to 40a and plus b. B is how much? Plus 340b. Plus 340b. B is minus 1.3. Just simplify this. 214 equal to 40 times of a minus. Multiply करो इसका. minus 442. Minus 442. Okay. Now simplify. So 214 minus इधर जाएगा plus हो जाएगा 442 and this equal to what? 40a. No, add them. 426 and 656. 656 divide by 40a. So a आपको क्या मिलेगा? 656 by 40. So how much? A is how much? 16.4. 16.4. Okay. So you got the value of a and b. Now putting the value of a and b in equation number double star. Putting values of a and b in equation number double star. We get x equal to 16.4 minus 1.3 y. So this is the required equation of line x on y. Okay, you got it? You got it? Yes, sir. Yes, हाँ. sir. Which is required? Which is required equation of line x on y. Now see here, if I ask estimate the value of x when y equal to something, इसी प्रॉब्लम में अगर मैं ऐसा पूछता estimate the value of x when y इक्वल टू सपोज मैंने 10 दे दिया, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे y के प्लेस पे आपको 10 रखना है और x की वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पे x हो गया एंड 16.4 माइनस 1.3 इंटू 10, तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ से 16.4 माइनस यहाँ पे माइनस पॉइंट चला जाएगा 13 हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट इफ यू सब्ट्रैक्टिंग दिस 3.4. Is this correct? Yes, sir. हाँ. So if I ask for estimate the value of x when y equal to something, तो आपको इस तरह से फाइंड करना है. अगर पहला इक्वेशन में दिया रहेगा estimate the value of y when x equal to something, तो आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना है. ठीक है? तो इस तरह से आपको एडिशनल प्रॉब्लम वहाँ पे ऐड हो सकते हैं. तो इसको ज़रा याद रखना था कैसे फाइंड किया जाता है. Now we will go for next problem. You understood now this much? Very simple this. Yes, Have you sir. understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. See here, in the exam if I ask fit a straight line for the following data, मैंने मेंशन नहीं किया है, आपको x and y फाइंड करना है कि y on x, तो आपको दोनों फाइंड करना है. ठीक है? And if I ask fit a straight line y on x, तो you have to determine only y on x. Don't find x on y. Don't waste your time in your exam. Getting? Are you getting this much? Yes, sir. Yes, sir. हाँ.
चलिए, वन सिंपल प्रॉब्लम फॉर यू फॉर एक्सरसाइज, इसको आप घर पे करना, अभी नहीं. राइट डाउन द प्रॉब्लम. एग्जाम्पल नंबर 2. Example number 2. The following table gives age of a car. Following table gives age of a car. कोई कार है, उसका एज बता रहा है. The following table gives the age of car. ओ नहीं, the age of a car of a certain make, of a certain make, of a certain make, and annual maintenance, and annual maintenance cost, annual maintenance cost. Obtain the equation of line of regression. Obtain the equation of line of regression of cost on age, ओके. यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है. टेबल क्या दिया है? एज ऑफ कार, एज ऑफ कार दिया है आपको, और मेंटेनेंस यहाँ पे दिया. कार का कितना मेंटेनेंस होता है एनुअल, वो दिया है, मेंटेनेंस. ओके. सो 2 4 6 8, 2 4 6 8, then 1 2 2.5, then 3. ओके. अभी आगे क्वेश्चन है, एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अ कार. एस्टिमेट the maintenance of cost, estimate the maintenance cost, of a car of age 3. means what? क्वेश्चन आपको समझ में आया? What is your question? You have to determine the line of regression y on x. How will you know how to determine the equation of line y on x? Because यहाँ पे आपको क्या दिया? एज ऑफ कार. एज मीन्स व्हाट? पहला आपका रो क्या डिनोट करता है? एक्स डिनोट करता है. सेकेंड वाला वाई. सो आपको एक्स की वैल्यू दिया है. इफ यू विल हैव द इक्वेशन ऑफ लाइन वाई ऑन एक्स, a plus bx. If you know the value of x, then you can easily determine the value of y. Means what? आपको क्या फाइंड करना है? You have to determine the equation of line y on x only. Getting? Are you getting? Yes, sir. हाँ. So this is a simple exercise for you. Please do this problem at your home and tell me the answer in the next lecture. Okay. Now we will start the next fitting of curve. Fitting of parabola, or you can say second degree curve. Fitting of parabola.
fitting of parabola, or you can say second degree curve. Second degree curve, or fitting a quadratic equation, or fitting a quadratic equation. Quadratic equation. In the exam, if I ask fit a second degree curve, तो आपको सेम वही करना है. If I ask fit a parabola for the following data, तो भी आपको वही सेम थिंग करना है. If I ask fit a quadratic equation for the following data given below, तो भी आपको वही करना है. ठीक है. So for this, so to fit a parabola or second degree curve, to fit a second degree curve, y equal to a plus bx plus c x square, we will use following normal equation. We shall use the following normal equation. The following normal equations given below. So which normal equation you will use? Your normal equation is sum of y equal to a plus what is that? Sum of y equal to, हम लोग क्या लिखते थे, एन ए, where n is the number of observation, where n is the number of pairs of observation, n a plus b, then sum of x, then c, sum of x square. Okay, now next, sum of product of x y, and this equal to, we write a sum of x plus b sum of x square, and plus c sum of x cube, and next equation, sum of product of x square y equal to a sum of x square plus b sum of x cube, and plus c sum of x raised to 4. Okay, and these equations are known as normal equation. So for fitting a second degree curve, we will use this normal equation. Okay, so for this we will prepare your table. There is nothing different here. We will prepare as like a previous type of the question. Okay, okay. Let us do one problem for this, then you can understand it better. Write down the problem. Fit a second degree parabolic curve. Fit example number 3. Fit a second degree parabolic curve
curve fit a second degree parabolic curve to the following data. To the following data. To the following data. Okay. Data points are given below. Just write down the data points. Here we will have x and y. Okay. So we writing here 1 2 3 4 5 6 7 8 9. चलो लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बाप रे 9 तक है 9. Okay. Now next row is 2 6 7 8 2 6 7 8 2 6 7 8 10 11 11 10 11 11 then 10 9. Okay, so we have to fit the second degree curve. For this what have to do? First, solution. For this we prepare first table. Now let y equal to a plus bx plus c x square be the second degree parabolic curve. Be the second degree parabolic curve. Okay. Now the normal equation for these curves are given by the normal equations for this curve is given by the normal equations for this curve are given by, just write down all the normal equation over here. Yes, tell me one by one. चलिए स्नेहा बोलिए फर्स्ट इक्वेशन. Sum of y is equal to NA plus B sum of x plus C sum of x square. Then next, Sum of xy sum of product of xy is equal to A sum of x plus B sum of x square then plus C sum of x cube. Then next, Summation of x square y summation of x square y. is equal to A summation of x square Okay, a summation of x square plus B summation of b x cube summation of x cube plus c D summation of x x4. Is that correct? Yes, definitely correct. ठीक है, तो आपने सही बोला होगा. Equation number 1, equation number 2 and equation number 3. According to this we will prepare your table. First we write 9 है, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हाँ मिल जाएगा. चलिए first we prepare table. Here we write column of x, column of y, then we taking x square. Okay, we taking x square, यहाँ पे y square भी मैं लिख देता हूँ, and y square, then x product of xy, then
x cube and x raised to 4. बोलो, x cube and x raised to 4. These are the requirement column. So first write down the column of x. Column of x is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसको हटाना पड़ेगा. 8. Then 8 and 9. Okay. सर एक्स स्क्वायर वाई का भी कॉलम आएगा ना? X square y का. Yes, correct. So x square y square is there. So find the product of x square y square. We writing here x. अब कहीं पर भी लिख सकते हो किसी भी ऑर्डर से. ऑर्डर डजंट मैटर. ठीक है. मुझे अच्छा लगे टेबल, इसके लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ. सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर वाई, देन एक्स क्यू एंड x raised to 4. Just prepare a table. So y is what? Here 2, 6, 7, 8, 10, 11, 11, 10 and 9. Just taking square root. Sorry, squaring them. X square and y square. Do this. So 1 square, that is what? 1 square is 1. 1. 2 square, 2 to the 4. 3 3 ja 9. 4 4 ja 16. 5 5 ja 25. 6 6 ja 36. 49. 64 and 81. Okay. Now y square, that is 2 square is, that is 4, and 6 square 36, 49, 7 square 8 square 64, and 10 square 100, 11 square 121, then again 11 square 121, then 10 square, that is 100, 9 square 81. Now product of xy, फटाफट करो. 2 1 ja 2 and 2 6 ja 12, then 7 3 ja 21, 4 8 ja 32, then 5 10 ja 50, then 6 11 मल्टीप्लाई करो 66, then 7 से मल्टीप्लाई करो विथ 11 77, then 8 10 जा 80, then 9 9 जा 81. ओके. चलिए इसका स्क्वायर करो. अभी यहाँ तो स्क्वायर मिल गया. स्क्वायर एंड वाई, इसका और इसका, एक्स स्क्वायर एंड वाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, दैट इज व्हाट? 2 1 जा 2 एंड मल्टीप्लाई करो 6 and 4 24, 7 and 9 63, देन इसका मल्टीप्लाई करो. जस्ट प्रिपेयर अ टेबल फास्ट. आई एम वेटिंग फॉर यू. If you prepare, please tell me. Use your calculator and prepare. I am using calculator. So how much this? 7 9. Then 8 multiplied by 16. How much? 16. That is 128. 128. Which one this? Please don't miss your table column. Otherwise you will wrong. You will get wrong answer. Just properly use column. कभी कभी उल्टा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, ध्यान से करने का. So 8 multiplied by 16, you will get 126. Then 10 multiplied by 25, you will get 250. Then 11 multiplied by 36, 11
multiply by 36. How much this? 396. 396. 396. Okay. Eleven multiply 36, 396. Then 11 multiply by 49. 11 multiply by 49. 539. 539. Then 10 multiply by 64. We will get 6640. Then 9 multiply by 81. 9 multiply by 81. You will get 729. 729. 729. Okay. Now find xq. Find xq. That is what? इसका क्यू करना है आपको. या तो इसका क्यू करो, या तो क्या करने का, एक्स स्क्वायर और एक्स से मल्टीप्लाई करो फटाफट. यूज ए कैलकुलेटर एंड डू इट. आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर योर टेबल. Can you tell me the column of x, xq? Who will tell me? अभी यहाँ से आपको बुलाना पड़ेगा. यहाँ से सर मैं बोलता हूँ. हाँ, उपाध्याय बोलिए. एक्स क्यू बोलिए. एक्स क्यू का 1 8 8 27 27 64 64 125 125 216 216 343 343 512 512. 2 ओके. वेट 729. वेट इसको ज़रा इधर ले लेते हैं और इसको भी इधर ही ले लेते हैं. हाँ, 512. देन 729. वेट 729. देन लास्ट वन कंप्लीट. 1. कंप्लीट हो गया ना. हाँ सर ये होगा. x रेस्ट टू 4 का बोल रहा हूँ. हाँ, एक्स रेज टू 4 बोलो. 1 1 16 16 81 81 256 266. 256 सर. ओके सॉरी. 256. 625. Please, other students, do the sum of each column. How much? 625. 625. 1296. 1296. 2401. 2401. 4096. 4096. 6561. 6561. Okay. Now do the sum of each column. Do the sum of each column. चलिए, sum of x, sum of y, then sum of x square, then sum of y square, and sum of product of xy, then sum of product of x square y, then sum of x cube, then sum of x raised to 4. Okay, tell me the sum of x, column of x. Who will tell me? Who will tell me?
सत्यम Yes, sir. हाँ बोलो. Sum of column of x, how much? 45. 45. प्लीज अदर स्टूडेंट्स वेरीफाई इट, क्योंकि एक सिंगल मिस्टेक होगा तो पूरा सम्स हमारा फिर से रिपीट होएगा. नेक्स्ट, सम ऑफ कॉलम ऑफ y, हाउ मच? 74. 74. देन नेक्स्ट, सम ऑफ x स्क्वायर, 334. 334. नेक्स्ट बोलो, सम ऑफ y स्क्वायर, सम ऑफ y स्क्वायर इज हाउ मच? 676. 676. Now next, sum of product of xy, tell me. Sum of product of xy, other students what are you doing? यहाँ पे बस इतने लोग हैं, 9 लोग. कैलकुलेट कर रहे हैं सर. हाँ जस्ट कैलकुलेट करो, बैठो मत. सिद्धेश, सर स्क्रीन दिखाओ ना. हाँ वापस Sir, नीचे आ 2771. 2771. 2771. सर उसका नहीं हाँ. x स्क्वायर y का निकाला था मैंने. आपने एक्स स्क्वायर वाई निकाला. हाँ हाँ. एक मिनट. बोलो. 2771, करेक्ट. अब सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, हु विल टेल मी? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, 420. 421. 421. ओके, चलो. सम ऑफ एक्स क्यू, sum of x cube, how much you obtain? 2024. How much? 2024. 2024. Okay, this is 20. Then sum of x raised to 4, 15333. 15,322. 32. 15,332. okay, एक मिनट. x raised to 4, how much? 15, 332. 332. Two. ओके ओके. टेबल आप फटाफट प्रिपेयर कीजिए, तभी सम्स हो पाएगा. नाउ सी हियर, वी सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज इन नॉर्मल इक्वेशन. चलो, वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे बताइए, सम ऑफ y, सम ऑफ y, हाउ मच वी ऑब्टेन? बोलो. सम ऑफ y इज हाउ मच? 74. यहाँ से देख के बोलो पीछे, सम ऑफ y इज हाउ मच? Sir, 74. sum of x cube 2025. सम ऑफ x क्यू 2025. आपका 4 कैसे आ रहा है? 2025. ओके, चलिए, कम टू द नेक्स्ट पेज. सम ऑफ y, सम ऑफ y की वैल्यू पुट अप कीजिए. सम ऑफ y, देन यू विल गेट, हाउ मच यू गेट? 74. 74. and this equal to NA, number of observation, 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9A, here will be 9A, then plus next term
B sum of x. Sum of x is 45. 45 B and plus next term C sum of x square 334 C 334, that is what 334 C. Okay, now name this equation number 4. इसको equation number 4 दे दो. Okay, now come to the equation number second. Sum of product of x y. You obtain 421. 421. 421. And this equal to A sum of x. Sum of x is 45. Sum of x is 45 A plus next term, that is B sum of x square. B 334. 334 B and plus next term C x q. X q is 2025. 2025 C. Name this equation number 5. Now similarly you will have equation number 3. Equation number 3. Sum of product of x square y, that is 2771. 771 and this equal to A sum of x square. A is सर yes सर सम ऑफ एक्स स्क्वायर 285 है. 285 है. हम्म. यार कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग? टोटल नहीं कर पा रहे हो? फिर से रब करना पड़ेगा मुझे. सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज हाउ मच? 285. 285. अदर स्टूडेंट्स आर जस्ट स्लीपिंग क्या? बाकी लोग सो रहे हो? आप लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हो? कहाँ पे है शेयर? अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो आपका अटेंडेंस में कैंसिल करूंगा इधर से. यू आर जस्ट ऑनलाइन होके आप सो रहे हो माइक लगा के कान में. प्लीज डोंट डू लाइक दैट. डू योर कैलकुलेशन इंस्टेंटली. ओके यहाँ पे इक्वेशन में गड़बड़ हो जाए फिर तो. एक्स स्क्वायर में चेंज हुआ ना अपना 285. हाँ सर. यहाँ पे चेंज हुआ होगा. टू एट फाइव. नाउ इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 इज सम ऑफ. सर इक्वेशन 5 में भी चेंज होगा बी में. यहाँ पर ना एक्स स्क्वायर. हाँ. ओके यहाँ पर भी चेंज होगा. हाउ मच दिस? 285. now correct. Now come to the equation number 3. This is sum of product of x square y square, then A sum of x square. X square is how much? 285. X square is, please tell me, A x square is 285. 285A and plus B. B times of what? B times of x cube. 2025. 2025 B and plus C times of what? C times of x4. 15332. 15332. 15332 C. Name this equation number 6. चलो. Our job is to find out the value of ABC. Solving equation
Equation 4, 5 and 6. Yes. सर सम ऑफ x रेज टू 4 भी 15333 है, 332 लिखा है ना? 333 है हाँ हाँ सर। सर। यार, ऐसे करोगे आप लोग, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं गिरेगा, लेकिन वो राउंड ऑफ एरर है। ठीक है, 1533 15333। नाउ चेंज दिस ईयर। One five triple three. Getting? Okay. Now solving equation number 456 we get. चलो use your calculator and find out. वहाँ पे रिग्रेशन सर लाइन ए का वैल्यू 4.79 है। we get value of a is how much? 4.79। 4.79। ऐसे ही आपको कैलकुलेटर से ही निकाल के लिखना है, सॉल्व करने नहीं बैठना है। बोलो b बी 0.29। 0.29 और c 0.052। 0.052। हाँ Okay. Now substituting all the values in equation number star. Which one is star? Equation number A आपका star है. This one. Now substituting all the values in your required parabolic equation. So putting all the values of A, B and C in equation number नहीं है लिखा है, तो पूरा लिख दो इसको। A plus bx plus cx square इसमें पुट करना है आपको। Therefore we get y equal to a is how much? 4.79 plus b is 0.29 x and plus c is how much? 0.052 x square, and which is required second degree parabolic curve। ये पैराबोलिक कर्व है सेकेंड डिग्री। इसका डिग्री सेकेंड कैसे है? क्योंकि यहाँ पे पावर में यहाँ पे 2 है, तो ये इसको सेकेंड डिग्री बोलेंगे। सो विच इज रिक्वायर सेकेंड डिग्री पैराबोलिक कर्व। Now completes your solution. So these are the simple problems. Simple बोले तो these are the important problems for you, and this type of questions come for 8 marks. अगर आपको सेकेंड डिग्री कर्व फिट करने के लिए आएगा तो आपको 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा। Getting? If I ask for first degree or fit a straight line curve, then that question for 6 mark. So -1 3.5 0.27। आपने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है? So this is the second degree curve for the following data given below. आपके डेटा में जो आप दिया, कौन सा डेटा आपको दिया गया था? डेटा पॉइंट्स, ये डेटा पॉइंट दिया रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको सेकेंड डिग्री कर्व मिला है। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन डिटरमाइन द पैराबोलिक कर्व, but thing is what, you have to remember the normal equation, then only you can use, otherwise you are not able to find out this. Now one problem exercise for you. Will you take exercise? Example number 4. Fit a second degree curve for the following data.
data given below. Your data is given. Data is given x, y, then 10, 12, 13, 14. You will get 10, 12, 13, 14, 10, 12, 13, 14, then 15. Now you write down 2, 6, 5, 3, 1. So for this data, we have to fit a second degree curve. Now estimate the value of y. Estimate the value of y. Value of y when x equal to 12.6. Okay, so we have to determine the value of y when x equal to 12.6. So this problem is exercise for you, so please do this problem at your home. Now we have finished this chapter, fitting of curve. So today I have finished one module, that is regression of line. In that, what I learned here, we learned correlation coefficient, then rank correlation for repeated and non-repeated rank, then regression of line. There are two regressions of line, x on y and y on x, then regression coefficient. So we have two regression coefficient, x on y and y on x. And then after we learn what I learned here. Then after we learn fitting of curve. In that we learn two topics, fitting a straight line and fitting a parabola. So today we have finished one module completely.